गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ECB 601 फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स की 4th यूनिट इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का स्वभाव कैसा होता है, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम रेंट पे करते हैं। लेबर को जब हम लेबर की डिमांड करते हैं तो उसके लिए वेजेस पे करते हैं। कैपिटल की डिमांड करते हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि रेंट एंड वेजेस तो फिक्स होते हैं लेकिन इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। तो आज इंटरेस्ट का स्वभाव कैसा है, उसे कैसे निकाला जाता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसका वास्तविक रोल क्या है, क्योंकि ये बाकी सारे फैक्टर्स से अलग होता है। बार बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज पिक्यूलियर नेचर ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जो पिक्यूलियर नेचर है, मतलब चेंज होने वाला जो स्वभाव है, अलग अलग कैपिटल का हम अलग अलग इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, कैपिटल इज़ लाइक अ फ्रूट, क्योंकि कैपिटल तब बनता है जब आप अपनी इनकम को बचाते हैं, मतलब आप अपनी इनकम को कंज्यूम नहीं करते हैं। जब इनकम का नॉन कंजम्पशन होता है और फिर जब उसे रिप्रोड्यूस करना होता है तो कैपिटल बनता है। कैपिटल एक नॉन ह्यूमन फैक्टर है, प्रोडक्शन बट प्लेस, ये प्रोडक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन डिसीजन से ही अक्यूमुलेट होता है और इसको इकट्ठा करने के बाद जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक, ये कैपिटल कहाँ से बनता है और इसका यूज़ कैसे किया जाए, ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है और यही नेचर इसको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अलग करता है। अगर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी बनानी है तो हमें पहले कैपिटल को डिफाइन करना होगा, लेकिन कैपिटल सबके लिए अलग अलग है, तो कोई भी डेफिनेशन सक्सेस नहीं हो पाती है। अलग अलग इकोनॉमिक्स को ये डिफ़िकल्टी होती है कि हम क्या डेफिनेशन दें, एक फ़िक्स डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो इकोनॉमिक्स को ये डिफ़िकल्टी होती है कि इससे होते हुए, कैपिटल से होते हुए कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी बनाई जाए। तो अगर हमको ये डिटरमाइन करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और ये कैसे होता है, तो पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ग्रॉस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 चीज़ें आती हैं: प्योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट एंड रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the rate of interest under these contents. First, concept of rate of interest. Second, gross and pure rate of interest. Third, need of rate of interest. Then classical theory of rate of interest. Then Fisher's rate of interest. Criticism of the classical theory. New classical theory of loanable funds and its criticism. Then lastly, Keynes' liquidative preference theory of rate of interest and its criticism. Now let us discuss the concept of the rate of interest. The nature of interest and its determination has been the subject of controversy since long. The concept of rate of interest has been changing with the development of interest rate theories. History of economic thought shows more of controversy and debate on the determination and role of the rate of interest than on any other factor reward. This is due to the peculiar nature of capital as compared to other factors. Capital is a fruit of non-consumption of income and is reproducible. It is a non-human factor of production, but it is accumulated through human decisions and such
As such, it must be paid a minimum reward to be maintained or reproduced. The origin and service of capital is distinctly different from that of the other factors. As such, it requires a separate treatment. A major difficulty in building up a complete and general theory of the rate of interest is the lack of an all acceptable definition of capital. Anyhow, economists have sought to resolve the difficulty through various means. Before we undertake an exposition of the major attempts at explanation of the determination of the rate of interest, it is necessary to be clear about the distinction between gross and net rate of interest, or pure rate of interest as it is called. Now, what is the concept of rate of interest, gross and pure rate of interest? In common language, the term rate of interest is used to denote the contract or the gross rate of interest. The gross rate of interest includes payment for not only the use of money but also administrative cost, administrative costs and some insurance for the risk of default. The rate of interest charged on loans of different types in the market are gross rates of interest reflecting, besides the payment for the use of money capital, the appropriate payment for the cost of management of the loan and the payment covering the risk of the loan being not paid back. Since the administrative cost of managing the loan and its recovery as well as the degree of risk involved differs from loan to loan, the gross rate of interest also differs accordingly. The gross rate of interest is made of three components: the pure rate of interest, the administrative cost of managing the loan and the premium of risk of default. Let us study each of them in detail by taking examples of three different types of loans with different types of security: a personal loan, an automobile loan and a government bond with gross rate of interest of 30, 12 and 3% respectively. In these three types of loans, the security, the liquidity and the marketability of the credit paper differs. As a result, gross rate of interest also differ. Let us study the components of the gross rate of interest by taking the three examples. First, the pure rate of interest. The pure rate of interest is the charge for the use of the money capital loaned out. Since the various units of money lent out by different creditors are perfectly homogeneous, the pure rate of interest is the same in all types of loans. The pure rate of interest is that charged on loans which are totally riskless and have no administrative cost. Government securities or bonds bear the lowest rate of interest because a loan given to government is riskless. The loan is sure of being paid back on maturity date and is quite liquid in that it can be sold out in the market at any time. The government floats loan on so large a scale that the cost of administration of the bond is virtually nil. We may therefore take the rate of interest paid on government bonds as representing the pure rate of interest in the three types of loans referred to above. We can say that the pure rate is 3% and the balance represents the payment due to other consideration about the nature of the loan. Second, payment for risk of default. Two considerations weigh with a lender in assessing the degree of risk involved in a loan: the time for which the loan is given and the nature of security offered for the loan. The greater is the time for maturity of the loan, the greater is the degree of risk involved. The degree of risk also differs with the liquidity of the claim or security obtained by the lender against the loan. Since among the three loans referred to above, the government bond is riskless and the most liquid, it has no payment for the risk of default. Since the automobile loans are less risky and more liquid than the personal loan, the payment as premium for the risk in the latter may be 20%. Administrative cost. Third is administrative cost. The cost of administering the loan differs from one lender to another. It also depends on the nature of the loan. The cost of administering a personal loan is the highest because of the need to have a pronote or any such code paper. It is, in our example, 7%.
the cost of administration of an automobile mortgage loan in 3% and that of a government bond is virtually nil. Thus, the gross rate of interest vary with the type of the loan, whereas pure rates of interest are identical. This is shown in this three types of loans. Thus, gross rate, gross interest, risk premium, administrative cost and pure interest. पहला आपका है पर्सनल लोन, दूसरा है ऑटोमोबाइल लोन, तीसरा है आपका गवर्नमेंट लोन. पर्सनल लोन है आपका 30%, ऑटोमोबाइल लोन है आपका 12% एंड गवर्नमेंट बॉन्ड है आपका 3%. पर्सनल लोन का जो ग्रॉस इंटरेस्ट है आपका 30% है, जो कि सबसे ज़्यादा है. इसमें आपका रिस्क जो बैंक सबसे ज़्यादा इसमें इसलिए लेती है इंटरेस्ट, क्योंकि इस बैंक को सबसे ज़्यादा रिस्क इसी में है कि लोग भाग सकते हैं, तो उसका उन्होंने 20% किया है. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए 7% की कॉस्ट लगती है. प्योर जो इंटरेस्ट होता है वो आपका 3% है. जो इंटरेस्ट है आपका प्योर वो 3% है, बाकी सब आपका रिस्क प्रीमियम है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है. तो सबसे ज़्यादा आपका पर्सनल लोन में 30% लगता है. सेकेंड है आपका ऑटोमोबाइल लोन. जब आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको 12% इंटरेस्ट लेते हैं बैंक. ऐसा क्यों होता है कि इसमें कम लेती है? क्योंकि उन्हें पता है अगर आप बाहर लेके भाग जाएंगे तो गाड़ी तो है ही है, गाड़ी को हम वापस कर लेंगे. इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है वो कम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग फैक्टर भी कम होता है. प्योर इंटरेस्ट इसका 3% है. गवर्नमेंट बॉन्ड 3% है, रिस्क रहता ही नहीं है गवर्नमेंट बॉन्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं रहती है. प्योर इंटरेस्ट 3% रहता है, दैट इज़ 3%. ओके. It should be said that the various theories of interest which we are to study here deal with the determination and payment of pure interest rate of interest. This is because once we know the process of determination of the pure rate, the structure of gross rate of interest is automatically explained by the varying degree of risk on various loans and their liquidity. Now, what is the concept of rate of interest? Why is interest paid? Payment of the pure rate of interest is variously accounted for by different theorists. Payment of interest is necessary to induce those persons who have money capital to turn it over to those who wish to use it. Second, a person who is having wealth in liquid form, that is in the form of ready money, has three general alternatives. He can spend upon consumption, he can hold it in liquid form, or he can make it available for use to the producers or government. In making a decision on the choice of one of these alternatives, the person considers the rate of interest prevailing in the market. In other words, the pure rate of interest may be regarded as payment to induce people to save instead of consume, or as a payment to part with liquidity and money wealth available for use in production. The classical economists regarded interest as a payment to induce persons to save rather than spend on consumption. Thank you everyone. Have a nice day.